development. You know, it has led to the present situation where the rivers are huge but undrinkable, where the air is polluted, the water is polluted, the earth, the earth has become poisonous, you know, and it is because of the fact that man thinks he is at the center of the universe and everything is for him. So जो exploitation हुआ, it is said, या हम तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी सोच ऐसी नहीं है। हमारे यहाँ 1,84,000 योनियां हैं और हम सबको उनमें से निकलना है। और कहीं भी हमारा दर्शन या हमारा शास्त्र ये नहीं कहता कि हम दूसरों से सुपीरियर हैं और हमारा राइट टू एग्जिस्ट ज्यादा है। 4-5 साल 6 साल पहले 3-4 साल मैं हरियाणा के गांव के एक यूनिवर्सिटी में रहा। बहुत बढ़िया। it was an institution which was established for girls in 1936 by a very great social thinker, revolutionary, 1936, to establish a Kanya Gurukul in a village in Haryana, which in 2010 the government acknowledged and upgraded as a university. अब गुरुकुल और यूनिवर्सिटी का स्किज़ोफ्रेनिया है, वहाँ स्प्लिट पर्सनैलिटी है। जो भाग गुरुकुल का है वहाँ तो बोर्ड हिंदी में है, उन पे ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिनको हम बैकवर्ड मानते हैं, जैसे सत्यम वद धर्मम चर, सच बोलो धर्म का रास्ता अपनाओ, वहाँ ऐसे बोर्ड हैं। और जो यूनिवर्सिटी है उसकी बिल्डिंगें नहीं हैं, वहाँ लिखा है डोंट ट्रेसपास, डोंट स्पिट, यू नो, पूरी कल्चरल एक स्प्लिट पर्सनालिटी है। Anyways, that's another story for some other time. The villages, when I went there, at that point of time, वहाँ पे कोई ये प्लास्टिक के पैकेजेस वगैरह नहीं थे, you know, they were not there. And in the surrounding villages, even then at that time, सांप को मारते नहीं थे, सांप को कोई नहीं मारता था, हमारे यहाँ सांपों को भी नहीं मारते थे। Then even the poisonous creatures were not killed, because all life is sacred for us. All life is sacred. But for the Abrahamic civilizations, human life alone is sacred and deserves to be preserved. जिसके कारण, if you have heard, you must have heard of Descartes. Descartes, जो कि 16th century में, Descartes is the father of rationalism, just as Bacon is the father of empiricism. You know, Novum Organum of Bacon, and Descartes on method. Descartes says the goal of knowledge is to bend nature to man's purpose. ध्यान से इस पे रिफ्लेक्ट करिए। उनका एक बहुत बड़ा थिंकर, coming at the end of long tradition which begins with Genesis in Old Testament, where all earth is meant for the good of man. You see, he says the goal of knowledge, जितना भी ज्ञान आप अर्जन करते हैं, उसका ध्येय क्या है? प्रकृति को मनुष्य के सुविधा के लिए तोड़ना मोड़ना, प्रकृति को मनुष्य की सुविधा के लिए, सुख सुविधा के लिए तोड़ना मोड़ना, exploiting, bending is the word, bending nature. And you know, the West bent nature so much, उन्होंने इतना bend किया nature को, that now they have set up in every university a department of ecology, a department to preserve the environment. तो ये उनकी typical habit है, पहले कोई चीज डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर उसको बचाने के लिए डिपार्टमेंट बनाते हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। क्योंकि उनकी बेसिक थिंकिंग जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड है।
ये कार्ल मार्क्स तो 19वीं शताब्दी में कहा कि कॉन्फ्लिक्ट इज द क्लास कॉन्फ्लिक्ट ही वाज टॉकिंग ऑफ, कॉन्फ्लिक्ट इज द रूट ऑफ प्रोग्रेस। अगर आपने प्रोग्रेस करना है तो कॉन्फ्लिक्ट। पर कार्ल मार्क्स कोई सडनली पैदा नहीं हुआ वेस्ट में। रनेसा में क्या हुआ? रनेसा में देयर वाज एन ontological shift from God to man and epistemological shift from the book to reason। ये बड़े बड़े शब्द हैं, अर्थ इनका कोई ज्यादा नहीं है। मतलब ऑन्टोलॉजी मतलब ये है कि क्या जानने को है, what is there to know। Earlier, right through the Middle Ages, the West was mostly concerned, their knowledge was concerned, pursuit of knowledge about God, nature of God, nature of man's relationship to God। ये उनकी स्कॉलरशिप थी सारी। भगवान क्या है, गॉड क्या है, गॉड विद ए कैपिटल जी। भगवान शब्द इज नॉट टू बी यूज्ड, क्योंकि हमारे यहाँ गॉड एक नहीं है। हमारे यहाँ भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, ब्रह्मन और वो सारे सिनोनिम नहीं है। हमारे यहाँ अब्राहमिक गॉड कैपिटल जी की तरह हमारे हिंदू धर्म में गॉड है ही नहीं। हमारे यहाँ गॉड नहीं है। हमारा जो ज्ञान है वो गॉड के बारे में नहीं है। हमारा सारा ज्ञान ऋग्वेद से लेके अब तक इट इज अबाउट ह्यूमन लाइफ एंड द कंडीशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। नदियां, पहाड़, नाले, ये कैसे ह्यूमन समाज कैसे रहता है। तो ये बड़ा, इसमें कभी डिटेल में बोलेंगे तो बताएंगे। बट दो कल्चर्स है ना, अब्राहमिक एंड वैदिक। अब्राहमिक इज एक ईश्वरवादी, जो एक ईश्वरवादी लोग हैं, मोनिस्टिक। और जो ईश्वर है वो फॉर्मलेस गॉड। परंतु सर ये ध्यान से समझिए, निराकार है पर निर्गुण नहीं है। The Hebraic God is an angry God, says Spinoza। वो निर्गुण नहीं है, ये लॉजिकल फॉल्ट लाइन है। इसीलिए वो तीनों, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, तीनों एक ईश्वरवादी हैं, फिर भी आपस में लड़ते रहते हैं। एक ईश्वर है, कांस्टेबल गॉड। हाँ, कांस्टेबल। I use that term in my earlier lecture। The Abrahamic God is a constable। वो चालान काटता रहता है, चालान काटता है। तो गॉड के बारे में सोचते थे। तो रेनेसा में क्या हुआ, क्योंकि the reason we are not going, but then there was a shift। It was chiefly because of the Arab invasions। There was a shift from thinking about God to thinking about man and anthropocentric, man-centered thinking शुरू हुई उनकी। तब एक मिनट में बता दूं कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में गॉड नहीं है। एक छोटा सा एविडेंस देता हूं आपको। जो 6 शास्त्र हैं आपके, षड दर्शन, उसमें मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक, तीनों में गॉड की कैटेगरी है ही नहीं, गॉड तत्व है ही नहीं। सिर्फ योग में ईश्वर है, पर वो ईश्वर भी बड़ा ही एक डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ ईश्वर है, क्योंकि वो उसकी कोई यादाश्त नहीं है, स्मृति नहीं है। तो अगर आप उसको प्रेयर करोगे, उसको याद भी नहीं रहना कि इसने क्या मांगा था। तो इसलिए मैंने पिछली बार वो बोली थी लाइन कि पंडित भागवत शास्त्री जी का कहना, स्मृतिहीन ईश्वर ईश्वर नास्ति। वो स्मृतिहीन ईश्वर है। तो हमारे यहाँ गॉड नहीं है। वी डोंट हैव ए गॉड इन दैट सेंस। उनका गॉड जो है चालान काटता है, कांस्टेबल है। तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड गॉड, दैट इज द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट इन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। दैट इज व्हाई दे आजकल कहते हैं ना, गॉड इज डेड, सो दे किल्ड गॉड। फिर उन्होंने गॉड को मार दिया, दे किल्ड गॉड एंड मैन। अब मैन के बाद दे स्टार्टेड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। जब डेकार्ट कहता है द गोल ऑफ नॉलेज इज टू बेंड नेचर टू मैन्स पर्पस, तो आदमी, पहले भगवान आदमी के पीछे पड़ा हुआ था, अब आदमी प्रकृति के पीछे पड़ गया, नेचर के, हाँ, अपनी सुख सुविधा के लिए।
और इतनी बुरी तरह पढ़ा कि अब बेचारे इकोलॉजी इकोलॉजी, नाउ नाउ दे टॉक ऑफ टू क्राइसिस इन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, एंड वी आर टू द एक्सटेंट दैट वी आर वेरी गुड एप्स, हम बहुत अच्छे एप हैं। वी हैव इंपोर्टेड ऑल द वाइसेस एंड एक्सपोर्टेड ऑल आवर वर्चूज। उनकी जो गलत चीजें सारी हमने इंपोर्ट कर ली हैं। तो हमारे यहाँ भी काफी शहरों के लोग वैसे ही सोचते हैं जैसे वो सोचते हैं। तो मैन मैन एंड नेचर का अपोजिशन है वहां, नेचर और मैन। एंड द टू क्राइसिस दैट द सिविलाइजेशन फेसेस is the social crisis and environmental crisis. Social and environmental. Social crisis क्या है? आप 1960 से सोचिए। अब चलिए फर्स्ट वार छोड़ दीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वार छोड़ दीजिए, अब वियतनाम से शुरू करिए। देयर इज नॉट ए ईयर सिंस 1960 when the West has not been fighting some war or the other. Some war or the other. आप गिन सकते हैं सारा, मतलब कुछ भी नहीं लगते। पावर है, लीबिया में घुस गए क्योंकि वो गद्दाफी खराब है, ईरान में घुस गए, ईरान का वो खमीनी खराब है, कभी अफगानिस्तान में घुस गए, कभी कतार में आप चले गए, आप कतार को बेस बनाया हुआ है ना, उसकी बारी लगेगी। आधा सीरिया बर्बाद कर दिया, वो लगे हुए हैं। The West is, sort of has a, उनको एक प्रकार की जैसे उनकी डेस्टिनी है। जैसे मैं पंजाबी में कहते हैं, पता नहीं पंजाबी कितने हो आप में, कि तुसी मामे लगते हो भाई। अगर उनको आपस में झगड़ा हो रहा है लोगों का, तो आप क्या मामा लगते हो उनके? क्या बीच में जाके बंदूकें गन? अभी यूक्रेन में क्या कर रहे हैं, यूक्रेन को बर्बाद करवा दिया बंदूकें दे दे के। बंदूकों की बजाय अगर एक आदमी अपना मरवाते ना वहां, तब तो ठीक था। सो दे आर स्टैंडिंग बाय यूक्रेन टिल द लास्ट यूक्रेनियन। जब तक आखिरी यूक्रेनियन नहीं मरेगा, उसको बंदूकें दिखते रहेंगे। यू टू थिंक, दिस कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड सिविलाइजेशन, one crisis, social crisis, fighting. In fact, it is almost like tribal wars. जो किसी जमाने में tribal wars होती थी ना, उसी प्रकार की tribal wars हैं। The second crisis is environmental. उसमें आपने सुना होगा कि there is a hole in the ozone layer. There is a hole in the, तो वहाँ कई बार आग की बारिश होती है, fire rains take place, and warming is absolutely definite, and the receding glaciers and all those things, all those things. And the idea, you see, beyond 50 degree, the human body is such that if the temperatures remain steady above 50, then the human genus will be destroyed sooner or later. If the temperatures constantly remain above 50, the human race. एक बार एक हमारे यहाँ कुछ बड़े अच्छे बुजुर्ग होते थे, वो कई बार पैसा जिनके पास ज्यादा होता है, तो वो ड्यूरिंग रेन्स, उसके ऊपर लिखा हुआ है सरस्वती सरस्वती नदी, that was the bed of Saraswati. But during the Mahabharat war, it was an overflowing river. See? And the war was fought along the banks of Saraswati from the Shivalik ranges to the town of Sirsa, 250 kilometers down, from where Saraswati had taken a great end and moved into Rajasthan. See? So that area, fertile area, even today, that area is a very fertile area. And the underground water, there is an underground channel of Saraswati water where you have the fresh water, very deep, but it is there. So, the river dried up. Raja Prithu was the king of Prithudak. Prithudak was the name of the city. Today, that city is known as Pihova. And Pihova along with Gaya are the two places in India जहां पिंडदान होता है। महाभारत की लड़ाई के बाद सारे जो योद्धा मरे थे,
उनका पिंडदान पेहोवा में हुआ था, एंड पेहोवा इज पृथुदाक. द नैरेटिव सेज दैट पृथु ने 5 बार धरती का दोहन किया. He exploited the earth 5 times. As a result, there was a drought and the river Saraswati dried up. Of course, it's a legend that has been made. But river Saraswati dried up gradually as as the weather changed. 1900 BC, the river Saraswati had dried up. And it is then that your civilization moved from Punjab, Haryana to the Ganga Yamuna belt. Ganga Yamuna. The Vedas were composed in Punjab, Upanishads in Saraswati Valley, the Haryana, and in the Ganga belt, all the Puranas were composed, and the Bhakti movement and all those things started. Anyway, that's an intellectual history which is along with the climatic history, with the climate, how things change. तो ये एनवायरमेंटल क्राइसिस जो है, ये अब एवरीबडी टॉक्स अबाउट. एंड हु डू यू ब्लेम? You blame two things: the concept of development and the concept of modernization. Development is Darwinism, ना? Darwinism is development. और प्रोग्रेस क्या है? प्रोग्रेस ये है कि आपके जहां हम अलग अलग घरों में, एक घर होता था जिसमें जॉइंट फैमिली रहती थी, अब हम मल्टी स्टोरीड फ्लैट्स में रहते हैं, और एक फ्लैट में पेरेंट्स के लिए जगह नहीं होती, कुत्ते के लिए होती है. समाज इस तरह मॉडर्नाइज हुआ है कि माँ बाप तो गांव में रहते हैं. कैसे लाऊं जी, यहाँ तो जगह ही नहीं है. मेरा 3 बेडरूम का फ्लैट है, एक बेडरूम में बच्चे रहते हैं, एक में हम हैं, और एक में कुत्ता है. कुत्ते का डॉक्टर भी आता है, कुत्ते के बिस्कुट भी आते हैं, है ना. तो ये डेवलपमेंट है. It is, so this notion of this social Darwinism, economic Darwinism, political Darwinism, ethical Darwinism, all this, progress is double-edged. The societies which remain stuck to their traditions, those societies today have a higher happiness index than the developed Western countries. Developed Western countries. You'll be amazed that America alone consumes 18 billion worth of वो जो composed sleeping pills. 18 billion worth of sleeping pills every year. 18 billion. नींद ही नहीं आती लोगों को, नींद नहीं आती. और यहाँ तो जागा रहना मुश्किल होता है. हम जो हैप्पी इंडिविजुअल होता है, वो तो उसको तो आफ्टरनून में ही नींद आनी शुरू हो जाती है, बैठा बैठा सो जाता है, हैप्पी इंडिविजुअल. बट इफ यू आर ए सक्सेसफुल इंडिविजुअल, द अपोजिशन बिटवीन हैप्पीनेस एंड सक्सेस, इफ यू आर ए सक्सेसफुल इंडिविजुअल, तो आपको रात को भी नींद नहीं आती, because you have paid a huge price for your comfort, for success, for what Aristotle, called power. We also say that it is always there. It was not created. Anadi Ananta. And we also say that it has cycles. It collapses on itself and comes out again. No, because Brahman is inherent in nature, not outside it. क्योंकि ब्रह्मन इज इनहेरेंट, इमानेंट, हर चीज में है, इसलिए एवरीथिंग इज सेक्रेड, नेचर इज सेक्रेड. सो माय ग्रैंडफादर इन माय चाइल्डहुड, अगर इफ वन वुड, ए चाइल्ड विल pluck a flower in the evening or try even at any time, the grandfather say, why are you breaking it? Huh? And in the evening, if you touch a plant, they will say, don't you know they also sleep? ये हमारी फोक नॉलेज था, फोक लोर थी, फोक कल्चर थी कि क्यों थे. आई हैव सीन वेजिटेबल सेलर्स even in this God forsaken city of Delhi, which is a काम की नगरी है ये,
जैसे बंबई अर्थ की नगरी है, और चेन्नई धर्म की नगरी है, और कलकत्ता मोक्ष की नगरी है, काली कलकत्ते वाली। दिल्ली काम की नगरी है। Even in this city, I have seen some days, some years back, a old village, old vegetable seller, when he opens out, he keeps 100 grams of paneer and he makes it into smaller pieces for the mice, चूहों के लिए। तो मैं, बाबा जी ये चूहों को क्यों खिलाते हो? बोले इनको भी तो खाना होता है ना, अब ये खा लेंगे फिर सारा दिन ये कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करेंगे, रात को भी नहीं करेंगे, तो कोई उथल उथल नहीं मचाएंगे। तो दिस notion of you being a part of the continuity, mind you, Descartes a Cartesian conception of separateness of reality. Everything is separate. We don't believe in that. We believe in the continuity of all life, interdependence of all life, interdependence. So these are inbuilt in our nature, inbuilt in our nature, and जड़ चेतन, the consciousness, for example, वहाँ innate matter, inert matter और alive matter। हमारे यहाँ जड़ चेतन हम कहते तो हैं, पर जड़ में भी चैतन्य है। Even, for example, the plants, in a human being the consciousness is जागृत है, पर जो plants हैं उसमें निद्रा में, कुछ चीजों में सुषुप्ति में है, कुछ में डीप स्लीप में है। In metals also there is consciousness, but you see the changes in matter after decades, while in a flower you see it from the morning to evening, and you see, अरे इसमें लाइफ है, इसमें लाइफ है, और ये एक दिन में ही मुरझा गया। मेटल भी मुरझा जाती है। आप अगर गाड़ी, अपनी कार धूप में 10 साल रखो, धूप में ही खड़ी रखो, अब देखेंगे उसकी मेटल का, यू विल सी दैट हाउ इवन देयर लाइफ हैज डिक्लाइंड, लाइफ हैज डिक्लाइंड। दैट्स व्हाई, ये हमारे यहाँ जो पुराने लोग हैं, जब वो सारा दिन गाड़ी या मोटरसाइकिल चला के आते हैं, सेफ घर पहुंचते हैं, तो आके उसको नमस्कार करते हैं, थैंक यू, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी होम सेफ। ये चीजें बदल रही हैं, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी पढ़ गए, है ना, अंग्रेजी पढ़ गए, और मॉडर्नाइजेशन फॉर अस इज westernization, although the whole notion of modern does not apply to India at all. Modern is an event in the European history of ideas. Renaissance में modern हुआ। What was modern? Shift of object of knowledge from God to man, and shift of the means of knowledge from book to reason. तो तर्क में तर्क को साधन बनाना ज्ञान का, और भगवान की जगह इंसान के बारे में सोचना। पर हमारे यहाँ फ्रॉम बिगिनिंग, व्हाट आर द 4 एंड्स ऑफ लाइफ? हमारे यहाँ शुरू से है कि इस जीवन चार एंड्स हैं लाइफ के, 4 पुरुषार्थ हैं, है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष का गॉड से कोई रिलेशनशिप नहीं, ह्यूमन बीइंग से रिलेशनशिप, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो फ्रॉम द बिगिनिंग, वेदों के जमाने से चार ये पुरुषार्थ हैं, और 3 मार्ग हैं। देयर आर 3 ways in which you can realize these, ज्ञान, कर्म और भक्ति। You can, bhakti is the most difficult, although people think it is most foolish. It is the most difficult. ज्ञान, कर्म और भक्ति, और ये मार्ग अलग नहीं है, वैसे अलग नहीं है। You cannot be a man of knowledge without being a man of action, because it is only action which brings you knowledge, and you can't be a man of dharma, can't be a man of knowledge if you are not a righteous man. If you are not a righteous man, if you don't have reverence for things, you cannot be a man of knowledge. Remember Draupadi in the Kaurav Sabha, जब वो कौरव सभा में निकलती है तो कहती है, वो सभा नहीं जिसमें वृद्ध ना हो, ओल्ड, वो वृद्ध नहीं जिसमें ज्ञान ना हो, और वो ज्ञान नहीं जिसमें धर्म ना हो। You see, this is the thinking, this is thought. धर्म में ही आता है आपको पौधे के भी उतनी ही रक्षा। In Gujarat and Rajasthan, when there is drought summer में, the villagers, पानी पीने को नहीं मिलता, but
They make special arrangements for water for animals and birds. उनके लिए बनाते हैं। और जब यहाँ चिकन गुनिया हुआ था, जब दुनिया में हुआ था, millions of chicken were, killed in Europe. Millions. But in India, क्या हुआ? लोगों ने चिकन खाना बंद कर दिया, चिकन मारने शुरू नहीं किए। There they killed. बंगाल में दे ट्राइड, उन्होंने कलकत्ते में 20-25 लोग एम्प्लॉय किए उसको चिकन को मारने के लिए। अब वो बेचारे हैं तो हिंदुस्तानी, बंगाली वैसे भी इमोशनल होते हैं, वो कपड़े पहन के आए, और वो दिन में कोई 2 मारे, कोई 3 मारे, तो गवर्नमेंट ने कहा आपको इतनी सैलरी देते हैं कि ये 2-3 ही कि जी भाग जाते हैं। क्योंकि किलिंग इज नॉट ए सिंपल थिंग फॉर ए हिंदू। As a Hindu, you cannot kill. You cannot easily kill. For the Jews also, killing is not a simple thing. हमारी civilization में killing is not a simple thing. So this is our relationship to life. And we, so जड़ चेतन consciousness हमारे लिए हर चीज में आपको याद होगा बचपन में, अगर आप जमीन में कोई चीज पड़ी है उसको पैर मारते थे तो माँ कहती थी इसको ये कागज को टुकड़ा है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, तो उसको बच्चों को कहते थे इसको उठा के अपने माथे पे लगाओ, माथे पे लगाओ। These are the things, these are the things, little pieces of evidence which show you how we relate to the whole environment, to the universe, to beings, to flora, to fauna. It is not for nothing that India, particularly India this side of Punjab, ये जो बिहार है, बिहार वगैरह में, यूपी में आदमी भूखा बैठा होगा, उसके सामने 4 परिंदे बैठे खेल रहे होंगे, पर वो परिंदों को मार के अपनी भूख नहीं मिटाता। हाँ, जब अब नॉर्थ वेस्ट पे जाते हैं तो घोड़ा भी खा जाते हैं, कैमल भी खा जाते हैं, उनको जो चलती हुई चीज नजर आती है वो खा जाते हैं। बट हियर देयर इज रेवरेंस फॉर लाइफ, सो दैट इज अनदर थिंग। देन अब देखिए हमने what mechanism have we developed for preserving the animals and birds? हमने वाहन बना दिए देवी देवताओं के। चूहा, the poorest creature, मतलब जिसको देख के भी घृणा होती है और डर लगता है, गणेश जी का वाहन बना दिया। So even the mouse is sacred. Dog, हमारे वो जो भगवान शिव का जो काल का जो रूप है, उसका वाहन डॉग है। और जितने नागा सन्यासी हैं, आपने देखा होगा, वो डॉग को रखते हैं बिकॉज दे से इट इज द क्रीचर विद हाईएस्ट वैल्यूज। आप उसको डांट दो तो परे चला जाता है, प्यार से बुलाओ वापस आ जाता है, और उसके मन में नहीं रहता कि मेरे मालिक ने मुझे डांटा है। तो वाहन बना दिया। अब पैरट होता शुकदेव, व्यास का बेटे का नाम ही शुकदेव। और कौवा, क्रो, वेरी फ्यू पीपल नो दैट द फर्स्ट नरेटर ऑफ रामायण was Kakabhushundi. A crow narrated the Ramayana. These are, आप एक लेक्चर दे के समझाइए कि भैया कौवा भी अच्छा होता है, या आप कौवे को सेक्रेड बना दीजिए by making him the narrator. The society will imbibe what are the theological or religious beliefs are attached to something. The society then imbibes them. But a pure intellectual अंग्रेजी में बोल दिया कि भैया all these birds, after all they eat parasites and they are useful for us. मतलब वहां भी हम इकोलॉजी के डिपार्टमेंट्स में भी सारी इकोलॉजी को अपनी यूजफुलनेस की टर्म्स में देखते हैं, यूजफुलनेस। बट इन इंडिया वी लुक एट इट एज समथिंग रिलेटेड टू लाइफ। उनकी भी लाइफ है, चींटी को भी अपनी लाइफ वैल्यूएबल है। इसलिए जैनी जो साधु होते हैं वो नंगे पैर चलते हैं, पैदल चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, कांटे भी लगते हैं, इसलिए चलते हैं कि पैर के नीचे आके कोई छोटा कीड़ा पतंगा ना मर जाए। Where other civilization? Do you have any other civilization which thinks like this?
But we have great admiration for the West, जिसने as late as 1940 to 45 पांच साल में 40 लाख ज्यूस को फैक्ट्रियां लगा के मार डाला. 5 lakh Jews were killed in factories. उनकी चमड़ी उठा के, उनके नाखून निकाल के, उनके बाल निकाल के कंबल बनाते थे. 40 से 45. ग्रेट वेस्टर्न क्रिश्चियन सिविलाइजेशन. किसी ने कंडेम नहीं किया, पोप ने भी कंडेम नहीं किया. अब 85 में जाके पोप ने माफी मांगी है. इस सिविलाइजेशन को हम एडमायर करते हैं. इन when the western people went to अमेरिका, तो वहां पे उन्होंने पूरी इंडियन, रेड इंडियन जो रेस थी, उस रेस को सिफिलिस की बीमारी इंट्रोड्यूस की. सिफिलिस एंड गन, उनके पास गन नहीं होती थी, एंड द होल रेस हैज बीन एलिमिनेटेड. Mexicans, when the Spaniards went to Mexico, there were 37 million Mexicans. Today, there are only 1 million Mexicans. 36 million eliminated. In Canada, there used to be billions of bisons, billions. Today, only you see their heads, with grafted and put on the wall. इतनी डिस्ट्रक्टिव सिविलाइजेशन. हम उसके एडमायरर्स हैं, हम उसके एडमायरर्स हैं. और हम अपने आप को सोचते हैं कि हम कुछ नहीं है जी. हमारे यहाँ तो बड़ा धक्का होता है, औरतों के साथ धक्का होता है, गरीबों के साथ धक्का होता है, लोअर क्लास के साथ धक्का होता है. हमारे वी आर द जैन ethics, the Jain people say blocking the natural flow of a river. Blocking the flow of a river is violence. Preventing a plant or a tree from growing naturally is violence. And not paying your employee before he asks for his salary is violence. उसके मांगने से पहले अगर आप उसको तनख्वाह नहीं देते हैं अपनी मेड को, इट इज वायलेंस. अब इतनी हाइट ऑफ सिविलाइजेशन, नदी का जल प्रवाह नहीं रोक सकते आप किसी. आजकल तो बोनसाई सिविलाइजेशन. उन्होंने कहा कि प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट और ट्री इज वायलेंस, बट दीज डेज इट इज अवर हॉबी. इतने बड़े बनियन ट्री को छोटे से एक उसमें गमले में उसको इतना सा बना देते हैं. So it is very symbolic. Our civilization itself has become a bonsai civilization. It's a small people's small civilization, quarreling and fighting. Do you think this civilization can produce the kind of epics that the world has produced at one time? Homer's Iliad, or the Shahnama of Firdausi, or Mahabharat, or Ramayana. Do you think this civilization can produce? No, it cannot. To produce, to produce such extraordinary volume with such extraordinary human beings, you have to have extraordinary human beings in the civilization also. But when we are puny people, bonsai civilization, people who kill each other because we are superior. We are superior. And dirty the rivers and dirty the air because everything is for me. That civilization cannot produce anything noble, anything enlarging. Okay? I think I will stop, Lakshmi Kanji. Can I stop? I am beginning to feel a little tired. Yeah. Yes, sir. Thank Thank you you. very much. Yes, sir. Any in between, sir, I was a little bit busy with some technical issues in relation to the workshop. That's why I could not hear you properly. But I beg an unconditional apology for being absent during the lecture. But I always enjoyed you, and I always enjoy your benign presence in every talk and presentation, wherever it is maybe. But sir, actually, as the course is on environmental philosophy, and you have covered from the concept of constable God to the bonsai community, and you have already, sir, covered a lot of things in relation to the concept of God, then how it is related to nature, starting from Descartes, Bacon, and also in Platonian civilization to Indian tradition and culture.
So that is a very tremendous aspect of environmental philosophy nowadays. And also there is a big debate between religion and environment nowadays, which is, which has a contributory role in Lynn White's article, The Historical Roots of Ecological Crisis. Lynn White says that it is religion which, it is Christianity specifically, which is the cause of ecological disaster and environmental imbalances. But it is religion, though White says that religion plays a role, but religion also plays a role in solving all ecological disasters, specifically human beings' behavior towards environment. But it is not Lynn White's statement. It is the statement of Indian culture. And it is the assumption of Indian civilization. And you mentioned that very well. And I always feel myself enlightened by listening to Thank you you very always. much. And In being, fact, now at my age, I am beginning to feel tired. When I was teaching in JNU, we used to have classes of 2 hours, 2.5 hours, we'll go on. But there are many important things which I still had to talk about, but because of tiredness, I stopped. no So, problem. for example, many of our rituals, social rituals, they are geared towards, environmental protection. For example, there is a ritual where ladies, uh, girls and married women, they tie threads around the banyan tree and about the people tree, and then there are the men, they put their forehead against that tree. So the notion of sacredness, sacredness, सात सात पुरियां सेक्रेड हैं, 7 नदियां सेक्रेड हैं, 7 क्षेत्र हमारे यहाँ सेक्रेड हैं, 51 शक्तिपीठ हैं, 51 सिद्ध क्षेत्र हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और वो सब स्थान हैं। हमारा पूरा भारत देश जो है उसका लैंड ही सेक्रेड है। इसलिए धरती माँ, धरती माता और भारत माता, यू सी, सेक्रेड है। दैट इज वाई तीर्थ, pilgrimage is a very important part of our civilization. And every person saves money in life, saves money all through his life to do 2 things, to do 3 things: to build a small roof on his head, to marry off his daughter, and number 3, to do the pilgrimage. 3 चीजों के लिए आम हिंदू परिवार जो होते हैं सारा जीवन काम करते हैं। एक घर बनाएंगे, बेटी की शादी करेंगे और तीर्थ यात्रा करेंगे। तीर्थ यात्रा, now तीर्थ यात्रा, pilgrimage, it is an expression of how you connect to the land, connect to everything. I remember a very old lady. Once I was sitting on top of the Chandi hill in Haridwar. A very old lady, apparently from Bihar area. She was sitting facing not towards the city, which normally people do when you are on the mountain. You sit down by look down on the city. She was looking towards the mountain ranges one after the other. And I asked her, अम्मा, आप कहाँ से आए हो? क्या बेटे, बिहार से आई हूँ। तो अम्मा, आपको रोका नहीं किसी ने इस उम्र में? सुनो ओल्ड लेडी, कि हाँ, बेटे ने बड़ा रोका। बेटा स्टेशन पे आया था, कह रहा था, अम्मा कहाँ जा रही हो इस बार? तो मैंने, अम्मा कहाँ जा रहे हो? कि बद्रीनाथ जा रही हूँ। तो मैंने, बेटे ने कहा कि अम्मा 1 साल रुक जाओ, मुझे इस बार छुट्टी नहीं मिली, अगले साल चले जाना। एंड अम्मा कहती हैं, and I have recorded it, I have put it in I gave a lecture in the University of Ulster in a European conference where European university professors were there. I gave a lecture on the concept of sacred in India, and there I quoted this lady. तो उसने कहा, बेटे ने कहा 1 साल ठहर जाओ, बेटा शरीर अपना अपना, दुख सुख अपना अपना। ये शरीर है तो चल लूंगी, जाऊंगी। अगले जन्म में अगर एक चींटी या के कीड़ा बन गई, सारा दिन चलूंगी तो 10 फुट चलूंगी। तो बेटा मुझे जाने दे, शरीर अपना अपना, दुख सुख अपना अपना। तो बाबू देखो, आई हूँ पशु पक्षी के दर्शन, पर्वत पर्वत पहाड़ के दर्शन,
पेड़ और पत्तों के दर्शन, नदी के दर्शन, मनुष्य के दर्शन, यही तो तीर्थ यात्रा है। और क्या? व्हाट ए ब्यूटीफुल डेफिनेशन ऑफ तीर्थ यात्रा, मनुष्य के दर्शन। एंड ऑफ कोर्स शी एडेड टू प्लीज मी, अगर बेटा मैं ना आती तो तुमसे मिलती, यू नो। दिस connecting yourself to the land, to the people, and holding, having reverence for everybody. और पशु पक्षी के दर्शन, फूल पत्ते पत्ते पेड़ के दर्शन, नदी नाले और पहाड़ के दर्शन, मनुष्य के दर्शन, यही तो तीर्थ यात्रा है। एंड शी वॉज ए यूनेस्को इलिटरेट, यूनेस्को के हिसाब से उसको इलिटरेट कहा जाएगा, बट आई हैव नॉट मेट ए मोर एजुकेटेड ह्यूमन बीइंग इन माय लाइफ, यू सी, मोर एजुकेटेड। तो हमारी कल्चर जो है वो है ही प्रिजर्वेटेड, कॉन्शियसनेस में ही है हमारे में। अब आजकल हम सीख गए हैं, आजकल हम वो ला के, एक तो देखिए नकली फूल लगाने लग गए हैं असली की बजाय, है ना, नकली फूल। और असली अगर देखते हैं तो कहते हैं अरे ये तो इतना सुंदर है कि नकली लगता है ना। मतलब असली भी जब नकली लगता है तो अच्छा लगता है। और फिर उनको प्रून करना और काटना और ऐसे हर चीज को ऑर्गेनाइज करना, हर चीज को कंट्रोल करना, उसको बजाय कि उसको ग्रो करने देना एज इट ग्रोज, है ना। शाम को अगर मुरझाता है मुरझाने दीजिए, अगर उसने इधर को जाना झुकना है तो झुकने दीजिए। तो दिस is a part of our thinking, and I'm sure you are all aware of it. We are all unconsciously aware of it. We have only to bring it to our surface. And I think national education policy में on page 6, page 15, page 19, page 20, and page 34, word environment appears. But only once on page 34, the expression environmental education appears. So our new education policy is not worried about environmental education at all. है ही नहीं उसमें, है ही नहीं। बाकी सब चीजें पढ़ाओ, इनको सिखाओ, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होने चाहिए, क्वालिटी एंड एक्सेस, यू नो, we will make campuses of the international universities here. अरे भैया आपके पास जो है ज्ञान है उसको भी तो दूसरों को सिखाओ। आप किसी जमाने में दुनिया को सिखाते थे, ये वो विश्व गुरु आजकल लोग बहुत बोलते हैं ना, मिनिस्टर भी बोलते हैं विश्व गुरु। तो मैंने एक दिन एक मिनिस्टर साहब को कहा कि विश्व गुरु एक कंपाउंड है, इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ है विश्व जो विश्व का गुरु है, और दूसरा अर्थ है विश्व जिसका गुरु है। ये दोनों मीनिंग है इसमें। तो मैंने कहा जी आजकल विश्व हमारा गुरु है, द वर्ल्ड इज आवर टीचर। हमें अपना तो कुछ पता ही नहीं, याद ही नहीं। डोंट यू थिंक ये जो बातें, ये जो मैंने जो आपको बातें कही, आप महाभारत पढ़िए, आप टेक्स्ट पढ़िए, सबमें मिलती हैं। मैंने 4 पुरुषार्थ मार्गों की बात करी, आश्रम बात करी, दीज आर ऑल रिलेटेड टू दिस एंड दे आवर वैल्यू सिस्टम। ये जो है कि सब 7 सिटीज सेक्रेड हैं, रिवर्स सेक्रेड हैं, 7 क्षेत्र सेक्रेड हैं। व्हाट इज द आइडिया ऑफ ऑल दिस? 51 शक्तिपीठ है वो सेक्रेड है, 12 ज्योतिर्लिंग है वो सेक्रेड है, और आप वहां जाइए और माथा टेकिए, माथा टेकिए। दिस रेवरेंस, unless there is reverence, you will not preserve. And the reverence for flora and fauna and the earth comes from our beliefs, what our philosophy, our worldview has taught us. And I think we should make our students aware of these things, aware of these things, rather than our राजा शिवी, बड़ा पुराणों में उसका नाम आता है। उनके जो किंग्स हैं उनके नाम आते हैं कि उसने, अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया फतेह कर ली, कांकर कर लिया। और राजा शिवी का नाम क्या आता है कि एक इंजर्ड पिजियन, कबूतर जिसमें एरो लगा हुआ है, आके उसकी झोली में पड़ा, झोली में पड़ा। एंड ही रिफ्यूज टू गिव इट टू द हंटर। ही सेज बिकॉज इट हैज सॉट माय शरण, एंड बट यू कैन टेक माय फ्लैश इन टर्न, इक्वल फ्लैश, मैं अपना फ्लैश दे देता हूं, पर मैं ये जो परिंदा मेरे पास आया है ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा। हम अपने राजाओं को ऑनर करते हैं इसके लिए कि उसने दुनिया फतेह कर ली,
वो कांकर कर लिया. Conquering yourself is the highest conquest in the Indian philosophy. Conquering yourself, not others. There is no other. इंडिया में तो कोई अदर नहीं है. अदर इज इनसाइड अस, हमारे अंदर है. यू आर योर फ्रेंड, यू आर योर एनिमी. भगवत गीता कहती है यू आर योर फ्रेंड, यू आर योर एनिमी. तो आप अपने आप को जब, एंड यू नो दिस पावर कम्स फ्रॉम शुद्ध पुण्य, प्योर आइडियाज, प्योर थिंकिंग, लव एंड रेवरेंस फॉर अदर्स. अब शंकर का वो जो है ना विवेक चूड़ामणि, ब्रह्म आत्म एकत्व बोधेन मोक्ष सिद्धयति नान्यथा. जब आप ये रियलाइज करते हो और आप में और दूसरों में कोई भेद नहीं है, तब आपका मोक्ष होता है. यू नो, एज गीता में भी है, यू सी योर सेल्फ इन अदर्स, अदर्स इन योर सेल्फ. अनलेस यू थिंक लाइक दिस, यू विल बी इंडिविजुअलिस्टिक लाइक द वेस्टर्न. मेरा कमरा बढ़िया होना चाहिए. जब से शुरू शुरू में एसी लगे ना, 2 कमरे के फ्लैट में एसी लगा लिया, तो लोगों को डर लगता था गेस्ट ना आ जाए. गेस्ट आएगा तो उसको एसी वाले कमरे में सुलाना पड़ेगा. तो ये है सक्सेस, ये है डेवलपमेंट. इट इज बेटर टू बी हैप्पी एंड अनसक्सेसफुल. I told my daughter long back when she had done metric and she was worried about, I said, look, don't worry. Pursue happiness in life, not success. There are too many successful people in the world, but there are very few happy people. So pursue happiness. Okay? चलिए, प्रवचन खत्म. Thank you very much. So, sir, can I take leave? Sir, thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank Thank you you very so much. much for your, for your precious time, sir. You are absolutely busy nowadays with lot of assignments. But I am and all the participants, on behalf of the participants, my uh, my my my, my pranam and my salutation to you, sir. Thank you very much. Jeet raho. I'll talk to you later, sir. Sir. Thank you, sir. Pranam. Padi ji, I'll take leave now. I'll take leave. सबको नमस्कार. I'll take. Okay, sir. Sir, thank you. अच्छा, थैंक यू. और क्या, बड़ा अच्छा, ये बड़े ह्यूमरस है. ये ऑडियंस को जमा के रखते हैं. मतलब सब सेंटर ऑफ अटेंशन है. इनके पास अटेंशन चला जाता है. मैं सुन नहीं पाया क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है रिलेटेड टू रिसोर्स पर्संस. अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ. कल आपके लिए आप लोग बिल्कुल खुश हो जाएंगे. ठीक है ना? कल छुट्टी नहीं है. कल आप लोग होटल में बैठे बैठे ऑनलाइन में सुनेंगे. कोई सोता हुआ, कोई पैर ऊपर के रखा हुआ, कोई बाथरूम में, कोई टॉयलेट में, कोई अम्बेडकर पार्क में. ठीक है? नहीं सुनिए, और मत सुनिए. आप लोग ना प्रेजेंटेशन कब करोगे? प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन तो करना होगा, जीस्ट देना होगा ना. बिना लेक्चर सुने कैसे जीस्ट देंगे? और हमारा लेक्चर सुन के वही जीस्ट हो जाएगा, ये नहीं. दूसरों को नहीं कीजिए. एक चीज सुनिए, देयर इज अ टाइम. आई मीन टुडे क्या होगा? अरे उसको बोल दो.